Hello, viewers. I hope you are doing well. Today we have this Surface Pro. This is for our battery replacements. Here you can see this is for the Microsoft Surface. It is a Surface Pro laptop. It is basically a tablet. So obviously to replace its battery, we will have to open the touch screen. So we open the screen panel and then replace the battery. To open the screen, we have this slim, very thin steel opener. So we will use this, and along with it, we have petrol. So we will use petrol. Otherwise, you can use thinner. So petrol can also be used. So it works excellently as well. Between, press the opener a bit in front inside this touch screen and added petrol. The petrol loosens the adhesive or double tape inside a bit. Because of this, it becomes easier to rotate the opener in between. The touch screen is quite delicate. Even a little carelessness can cause the screen or glass to break. So this work has to be done with extreme patience because the touch and the glass, sorry, the screen and the touch are both made with a single panel, which makes it quite costly. ऑपरर को हम घुमाते जाएंगे इसके अंदर चलाते जाएंगे आगे आगे। जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील होता है या ये जो ओपनर है ब्लेड टाइप, ये अगर आगे ना जा रहा हो, मूव ना कर रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल लें तो आगे चला चला जाता है फिर ये। तो इसी तरह आप पूरी चारों साइडों पे इसको घुमा लेंगे तो इस तरीके से ये गम हट जाएगी और पैनल ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ से हम घुमा लेते हैं वहाँ पे पैनल रिलीज हो जाता है हमारा। जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील हो जाए तो वहाँ पे पेट्रोल लगा लेते हैं या थिनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके चारों साइडों पे घुमा लेंगे इसको। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपने बहुत ही सब्र के साथ ये काम करना है। अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो नुकसान होगा।
ये लास्ट साइड रह गई हमारी, 3 साइडों से ओपन हो चुका है, ये चौथी साइड जो है इसकी बॉटम साइड वो रह गई है, उसको ओपन कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन फुली ओपन हो जाएगी। इसमें इस चीज़ का भी जजमेंट करना पड़ता है कि जो स्क्रीन है आगे उसके अंदर कितना फासला बाकी है, यानी कि जो हम ये स्टील का जो ओपनर है इसको जो हम अंदर घुसा रहे हैं ये कितना आगे तक घुसाना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि ऐसा ना हो कि वो आगे जाके स्क्रीन को कट कर दे तो वो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसको कितना आगे तक घुसाना है। ऑलमोस्ट स्क्रीन ओपन हो गई है जी, ये हो गई जी ओपन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन ओपन हो चुकी है अभी। इसे इधर एक कनेक्टर केबल है उसको ध्यान से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। टच ओपन हो चुका है जी, बाकी का काम जो है बैटरी रिप्लेसमेंट का वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह, पार्ट 2 में।